and this region is very crucial to any political party that wants to form the government in West Bengal. These 54 assembly constituencies are spread across 8 districts. North Bengal has always been a tricky spot for the Trinamool Congress. It won about 16 seats in 2011 and 22 in 2016, which is not too many. But in 2019, what happened was this entire region, or 7 out of 8 seats, Lok Sabha's constituencies, voted for BJP, which caused a concern for the TMC, after which both Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee have been spending a lot of time here. A crucial factor here is the Rajbanshi vote. Where will the Rajbanshi vote? They form about 18% of the voters in the whole state. They are a scheduled caste community. They consider themselves Bhumiputra of this place. They have been demanding for the NRC. राजवंशी समुदाय जो है ये पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है और हम लोग ये आशावादी हैं कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में भी राजवंशी समुदाय के लोग पूरी तरह से भाजपा की पूरा आशीर्वाद बरसाएगा। देखिए, राजवंशी जो वोट है वो तो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में उसका मेजर पोर्शन बीजेपी को मिला था, बाकी दिस टाइम इट विल नॉट हैपन। कि एक तो राजवंशी लोग को पता चला जो क्या ये सरकार क्या कर रहा है उन लोग को लिए। ये देखिए, उस टाइम बोला था कि जो हम लोग नारायणी सेना बनाएगा, बाकी कहाँ नारायणी सेना, कुछ नहीं है। राजवंशी लोग के लिए जो कुछ किया है Mamata Banerjee किया है, but they also know that in Assam, I think it was nearly 11,000 Hindus in Assam. उसमें तो ये थे, राजवंशी भी है। Why they are Bhumiputra और Bhumikonna, but इसका नाम नहीं है। They also know that this government, I think central government, they are not helping this Rajbanshi people. দেখুন, এনআরসি বিষয়টা 2019-এর আগে আমাদের এখানকার মানুষজন ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। বিশেষ করে ভূমিপুত্ররা চাইছিল কেউ এনআরসি হোক। এনআরসি হলে যারা ওপার বাংলা থেকে বিভিন্ন সময় এসছে তাদেরকে হয়তো ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবে, তাতে এখানকার মানুষরা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করবে। এই ধরনের একটা মানসিকতা অনেকের মধ্যে ছিল। কিন্তু আসামের ঘটনাটি ঘটার পর আসামের যে 19 লক্ষ মানুষের নাম বাদ গেল, তাতে দেখা গেল সিংহভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, মানে সংখ্যাগুরু মানুষ, এবং সেই মানুষদের একটা বড় অংশ রাজবংশী সমাজের। রাজবংশীরা ভূমিপুত্র, এখানকার তারা বাপ ঠাকুরদার 14 পুরুষ থেকে এখানে বাস করছে, অথচ তাদের নাম এনআরসিতে নেই। ডিউ টু যে কাগজগুলো দাবি করা হচ্ছে, যে ডকুমেন্টেশনগুলো, সেই ডকুমেন্টেশনগুলো প্রপার তারা করতে পারছে না, কারণ সেগুলোর অনেক সংরক্ষণের অভাব রয়েছে রাজবংশী সমাজের মানুষদের মধ্যে। সচেতনতা একটা সময় ছিল না, তো স্বাভাবিকভাবে সেটা এই মুহূর্তে এনআরসি বলুন যাই বলুন সেটা মানুষ ভালোভাবে মেনে নিচ্ছে না। It's interesting that both the parties are not really going hyperbole on the CAA and NRC. There surely is a certain degree of nuanced references to the CAA and NRCs. Rajbanshis have also seen that NRC has not been very successful in Assam. So could be that a certain segment of them are slightly skeptical. So while identity issues are very crucial in both Cooch Behar and Alipurduar, there is something that we hear quite often, which is lack of development. Women tell me that there are hardly any doctors here, there is a shortage of hospitals. Though Kamtapuri Rajbanshi languages have been recognized by the state government as official languages, there is a problem of schools teaching these languages. So, and then there is of course jobs, which is a very critical concern of people. This is a criticism that we hear of the TMC very often here, because except for one, TMC does not really have a lot of strong faces from North Bengal. A lot of its dominant popular faces come from South Bengal. বাংলার মায়েরা
বাংলার মেয়েরা সবাই নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে বাঁচতে চায়। উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের প্রয়োজন বলে মনে করছে বাংলার মহিলারা। বাংলার মহিলারা ভিক্ষে চায় না, অনুদান চায় না, বাংলায় কর্মসংস্থান চায়, সে পুরুষ হোক মহিলা হোক। The minority people, they are afraid of BJP. So, they won't cast their vote for BJP. Muslim log, they are afraid of BJP because they know that what BJP is doing all over India, how they are facing this people of Bajrang Dal, जो उसका ये है RSS, so they are इधर वो लोग तृणमूल के साथ है, दूसरी जगह में दे आर कांग्रेस के साथ है, कहाँ दूसरा पार्टी के साथ है, वो होना ही है। जो बीजेपी का खिलाफ लड़ेगा, जिधर जो लड़ेगा, दिस पीपल, ये नहीं कि दे आर तृणमूल के लिए कर रहा है। अगर तृणमूल के हटा के अगर कोई पार्टी इधर एंटी बीजेपी रोल प्ले करेगा, with Mamta's trying to consolidate the Muslim votes for her party, today we see Modi has gone for a very nuanced Hindutva appeal. He has made a soft appeal to people. He has made indirect reference to Mamta's appeal to Muslim votes and has said that what if I had asked for consolidation of Hindu votes? So that's what if is something which is totally the nuanced way of saying that there is a sudden need for Hindu consolidation in the BJP camp. Today, 2021, TMC is trying to regain lost ground, whereas all that BJP needs to do is hold on to that what it had earned. This is Vasudha Venugopal and Saurabh Bhattacharya in Alipurduar for the Economic Times.